गुजरात के वडोदरा के समा के कैलाशपति मंदिर में दिए के वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते पूरे देश में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वडोदरा शहर को भी दीपावली की तरह जगमगाने का आयोजन है, जिसके चलते आज वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट की अगुवाई में दिए बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे मौके पर लगभग 10,000 दिए वितरित किए गए। हर व्यक्ति को 5-5 दिए वितरित किए गए। इन दियों को 22 जनवरी को प्रज्वलित कर खुशियां मनाने की लोगों से अपील की गई, जिसके चलते इस दिन को भव्य बनाया जा सके। दिवाળી 22મી તારીખે દીવડા પ્રગટાવવાના છે। દિવાળી જેવું આપણે સૌએ ઉત્સવ મનાવવાનો છે। એટલે મારા ઘર પાસે કૈલાશપતિ મહાદેવ મંદિરની પાસે આ વિસ્તારના તમામ લોકોને, આ વિસ્તારના કોર્પોરેટરશ્રી, સંગઠનની ટીમ, આ સૌની સાથે રહીને દીવડા વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। સૌ પોતાના ઘરે દિવાળી જેવો માહોલ કરીને દીવડા પ્રગટાવે એ ભાવ સાથે રામલલ્લાના ભજન કીર્તન કરીએ એ માટે આજે દીવડા સૌને વિતરણ કર્યા છે। સૌને જય શ્રી રામ।